हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निधि सरोहे। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 क्वालिफाई किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अपने बारे में। आई हैड इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड आई हैड आस्क्ड यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन व्हाट टॉपिक रिगार्डिंग यूपीएससी और रिगार्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन डू यू वांट मी टू स्पीक ऑन। और कुछ सजेशंस आए मेरे पास कमेंट्स में, कुछ सजेशंस मेरे पास मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स के आए, मेरे फैमिली से आए। और मुझसे ये कहा गया, मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कुछ वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। बट based on my own personal experience during civil service exam and based on my real life experiences, I want to share with you that what are the reasons for stress during UPSC exam, what are the harmful effects of that stress, and how can we cope up with that stress. How can we deal with that stress? How can we manage that stress? And in fact, how can we prevent or avoid that stress? And is it possible to entirely avoid or prevent that stress from happening? So my personal experience says that stress is an integral part of UPSC preparation. I don't think that we can entirely get rid of stress or anxiety during exam preparation. It is evident, it is an inevitable part of the process. ये बिल्कुल मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, तो आई थिंक either that person is lying or that person doesn't know that he or she is going through the stress or the anxiety. In fact, at times I have myself been that person who used to tell her friends कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कल एग्ज़ाम है. बट नाउ दैट आई नो माई सेल्फ बेटर एंड आई नो life better, I think I used to be under stress. Maybe I was avoiding it, or I was trying to be strong, or I was trying to portray a strong face in front of myself, my friends, and my family. But I think stress is inevitable. So first of all, I would like to talk about why this stress is happening, or what are the reasons or causes for the stress. So first of all, we all know that the process of UPSC is a very long process. Normally it takes any person around 2 to 3 years to prepare and clear the exam, and this is the minimum time that is required. Normally it takes much more than that. For example, me, I qualified the exam in 3 attempts. It took me 3 attempts, so around 3 to 4 years process was there. So इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उस पूरे दौरान हम बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं, और बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है, रिगरस प्रेपरेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इज कॉज्ड. सेकेंडली, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, यू आर टोटली engrossed in the studies, you have to put in that much amount of effort and you have to put in those many hours for the preparation. That's why you get cut off from the society. Sort of you are not talking to your friends, you are not talking to your family that much, you are not going into social gatherings, you are meeting your family lesser. At times you have come to Delhi or other state headquarters for preparation for civil services exam, and that leads to stress. That feeling of missing the loved ones, that lack of support system, that causes stress. Next, there is societal pressure. By societal pressure I mean that जब भी आप इस पूरे दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे घर में कोई शादी हुई या किसी और इस तरह के फंक्शन में मैं गई. पहली बात तो फंक्शंस अटेंड ही नहीं करते थे हम लोग, बिकॉज पढ़ाई में लगे हुए थे. कभी भी कोई शादी है, मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो कैसे शादी अटेंड करने जाएंगे. तो बट कभी भी अगर आप कोई फंक्शन अटेंड करने जाएं, फैमिली फंक्शन, आपके
अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी क्या सवाल पूछेंगे आपसे, और बेटा कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, अभी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, कब आ रहा है रिजल्ट, यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस. दिस पुट्स एन अननेसेसरी सोसाइटल प्रेशर ऑन यू. और ऑफ कोर्स उस सोसाइटल प्रेशर से यू फील यू नो सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेटेड, और उससे स्ट्रेस होता है. नेक्स्ट देयर इज पीयर प्रेशर. बाय पीयर प्रेशर आई मीन जैसे मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ, मैंने डेंटिस्ट्री की है, तो 5 साल की डेंटिस्ट्री पूरी करने के बाद मेरे मोस्ट ऑफ दी जो बैचमेट्स थे, जो मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स थे, lot of them opened their own dental clinics, and within a year or two they started earning, or they started a job at some other clinic, or they started their master's degree. So अब ये सोच सोच के स्ट्रेस होता है कि यू नो जो आपके साथ के जो स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर्स हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, सो इंजीनियरिंग के इमीडिएटली बाद लोगों के 15-20 लाख के पैकेज लग रहे हैं, 25 लाख के पैकेज लग रहे हैं, एंड दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, दे आर pursuing their hobbies, they are traveling, they are enjoying their life with the money that they are earning, because they are financially independent and we are not. So that sort of puts us in a place of maybe inferiority. We start feeling जिसको आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं फोमो, fear of missing out. So we feel that we are missing out on so many things. Then our social media के थ्रू ये सब लोग अपनी लाइफ को डिस्प्ले करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और हमें लगता है कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं. जब मैं तैयारी कर रही थी तब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था, आज बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज की डेट में आई थिंक वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, द सोशल प्रेशर और द pressure from the peer pressure basically. इसके अलावा next I would say I think around the 5th reason is that financial pressure or the financial concerns. सबके फैमिली की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनको एक फ्री फ्लोइंग सोर्स ऑफ मनी अवेलेबल हो. बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज से आते हैं, वहाँ पे आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उसके मन में एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है कि मैंने अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं किया है, और मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, आई एम बीइंग अ बर्डन ऑन माय फैमिली. जैसे मेरे साथ भी ये हुआ क्योंकि मेरे साथ के सभी जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो स्पेशली जो इंजीनियर्स थे एंड डेंटिस्ट्स भी, बहुत सारे लोग धीरे धीरे काम करने लगे, कमाने लगे. इनफैक्ट मेरे जो खुद की मेरी सिस्टर्स हैं, दे स्टार्टेड अर्निंग at an earlier age than me. So एक आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर आपको फील होता है. एंड ये तो मैंने बात की है उस पूरे प्रोसेस की, उस सारे स्ट्रेस की जो आपको पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन के प्रोसेस के दौरान फील होता है. इसके अलावा एक वो स्ट्रेस भी होता है जो जस्ट एग्जाम से पहले होता है, यानी जिसे कहते हैं प्री एग्जाम एंग्जाइटी या प्री एग्जाम स्ट्रेस, जो आपको मे बी 10-15 दिन से पहले से एग्ज़ाम के आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, या एग्ज़ाम के पिछले दिन पे होगा. उसका कारण है द फियर टू फेल, बिकॉज देयर इज़ एन अनसर्टनिटी. 10 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस सिर्फ मे बी 15-20 हज़ार लोग देंगे, और इंटरव्यू तक सिर्फ 3,000 लोग पहुंचेंगे, और फाइनली 1,000 कैंडिडेट्स फाइनली क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट्स बनेंगे. तो एक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी सेट इन हो जाती है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, वेदर आई विल बी एबल टू make it or not, whether I'll be able to be successful or not, what if I fail, what will happen then. So all this stress and anxiety builds up. तो दोस्तों, अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि स्ट्रेस होता क्यों है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि उसके नुकसान क्या होते हैं, how it affects, how this entire stress is affecting our mind, our body, our preparation, everything. So firstly, evidently, if there'll be stress, there'll be health issues. There'll be health issues like headaches, migraines. पर्सनली मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे कितने फ्रेंड्स थे जिनको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हेडेक और माइग्रेन का इशू होना शुरू हुआ. सेकेंडली, देर आर डाइजेस्टिव इशूज़,
Lot of people that I knew, they had regular gastritis because stress is a known factor to cause गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक इश्यूज, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ, अगर डाइजेशन ही नहीं होगा तो ओवरऑल हेल्थ वर्सन हो जाएगी आपकी. थर्डली, बैक इश्यूज, बैक पेन, सर्वाइकल. पर्सनली मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ लॉन्ग सिटिंग आवर्स और प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से आई गॉट अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एट अ वेरी अर्ली एज. आई वॉज 22 or 23 when I got it for the first time. सो व्हाट आई मीन टू से इज़, ये तो हो गए हमारे फिजिकली जो हमें अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस. उसके अलावा मेंटली हमें कितना अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस, हमारे ब्रेन फंक्शन को बहुत अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस, और उसकी वजह से इंटर्न क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन खराब होगी. अल्टीमेटली वी आर aiming to clear the exam by preparing well, and due to this stress our preparation is going to get affected. Thirdly, stress is going to further cut us off from the society, because we will have the stress, the anxiety, एग्जाम नहीं क्लियर होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, हम अपने आप को फैमिली और सोसाइटी और फ्रेंड्स से और ज़्यादा कट ऑफ करते जाएंगे और ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाएंगे. What I mean to say is, stress is not at all good for us in general, and it is absolutely not good for delivering in the exam, for the exam preparation, for results, for getting best results in the exam. We have to find a way to manage this stress, because stress is evident, wo hoga, but we need to find how to manage this stress. So now we come to the final part of the video, stress management. How are we going to deal with it, manage it? So although we all have our different ways to manage stress in our lives, but मुझे जो लगता है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन स्पेसिफिक या एग्जाम प्रिपरेशन स्पेसिफिक जो सॉल्यूशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं टू prevent or manage stress, that I'm going to tell you, and I'm going to tell you those solutions in the order of importance जो मुझे लगता है, जो मेरे लिए काम किए. आप लोगों के लिए वही सब फैक्टर्स किसी और ऑर्डर में भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या इफेक्टिव हो सकते हैं. सो द फर्स्ट thing that helps me in life, and that has helped me in life previously while preparation, that was talking to family and friends and being constantly in touch with my family. So I'm so grateful that I have got a very supportive family, and I have got a big family. I have my sisters, my brother, my parents, my grandfather was there at that time. So all these people acted as an anchor. They acted as a support system. They actually acted as my therapists, and all thanks to them, या तो मुझे वो स्ट्रेस फील ही नहीं हुआ, और जब कभी भी वो स्ट्रेस था, आई जस्ट वेंटेड इट आउट टू देम. सो मेनी टाइम्स आपको मन करता है आप किसी को बात करके बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, what all you are going through, because it's a very rigorous process. You go through a lot of ups and downs. प्रीलिम्स दिया, क्लियर नहीं हुआ, या प्रीलिम्स दिया, क्लियर हो गया, मेंस दिया, और मेंस के बाद अगर आप फेल कर जाते हैं तो यू कम बैक टू ज़ीरो. एंड आफ्टर फेलिंग द इंटरव्यू एट द फाइनल स्टेज, इफ़ यू कम बैक टू ज़ीरो, इट इज़ completely devastating at times. So you really need your support system at that time. So please talk to your family and friends whenever you need to sort of vent out or share what you are going through during the exam preparation. The second thing, and there's a tie between the first and the second thing for me. The second measure for me at that time and now is physical exercise, physical activity, staying fit, physically active. Now the exercise can mean different things for different people. At that time for me it meant walk, run and a bit of stretching. बहुत सारे लोग उस समय पे जिम जाते थे, मेरे लिए वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था. ऑफ कोर्स थोड़ा सा फाइनेंशियल concerns भी रहते हैं when you are preparing, and if you are not earning, and because I lived in Rajendra Nagar when I was preparing for my exam. So basically you need to be physically active, you need to do some form of exercise. You can go for a walk, for a run, slow running, jogging. You can go for some cycling if someone
has an access to a swimming pool, you can go for swimming. You can do yoga. I mean, at that time, शायद मैं इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी. Now I practice yoga. Maybe at that time, had I known how powerful yoga is, I would have gone for that. And I really strongly recommend to all the candidates now, please practice yoga if you can. If you if you even have slight inclination towards that, please practice that. That is going to benefit you immensely. In fact, if somebody knows dance or wants to engage in dance as a physical activity, as a physical exercise, that is great. So all these things that I mentioned, exercise, dance, running, all of these things help release the good hormones in our body, the endorphins that elevate your mood, and they prevent you from going into stress, into a stressful state. They help manage stress immensely. The third thing that I know now, maybe at that time I wasn't so much into it, but for me right now it's meditation, and I think all the candidates who are preparing should practice meditation even for 5 minutes if that is possible, in the morning, in the night, doesn't matter, anytime. But meditation really would help you in managing your stress. The fourth will be practicing hobby. If you can find some time, maybe not every day, maybe once or twice in a week, anything that you like to do. If you like to read, then you can go for reading books. If you like to draw or paint or sketch, you can do that. That's really a good activity to engage your mind into something productive. For somebody, it can be cooking. For example, personally, me, sometimes I would, whenever I had time and whenever I was really stressful, I just did a little bit of cooking. Anything small, doesn't mean you have to do something really fancy. Fifth would be taking a break from study, a short break. Sometimes this break could mean, फॉर एग्जाम्पल मेन्स आ रहे हैं और आप बड़ा ब्रेक ऑफकोर्स नहीं ले सकते हैं, एंड इट्स जस्ट 3 months और 2 months बिफोर मेन्स. सो ऑफकोर्स आई वुडंट से कि आप एक एंटायर डे या 2 दिन आप ब्रेक ले लीजिए, बट ऑफकोर्स यू कैन टेक 3-4 hours ब्रेक, यू कैन टेक half a day break फ्रॉम द स्टडीज़. और अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम डेडलॉक आ गया है, स्ट्रेस हो गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके बाद बहुत टेंशन हो रही है, सो आई वुड जस्ट से जस्ट किताबों को बंद करके रख दीजिए. जैसे वी वर इन राजेंद्र नगर, तो हम लोग सब 2-3 फ्रेंड्स जो थे, हम लोग मिलके जूस पीने चले गए, या ऐसे ही 2 घंटे बैठ के बातें कर ली, या किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर ली, या जस्ट बाहर चले गए कहीं गार्डन में वॉक करने. तो बेसिकली एक छोटा आप ब्रेक ले लीजिए. अगर कोई आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आसपास रहते हैं तो उनसे मिलने चले गए. पर्सनली मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ. आई रियली लव टू वॉच मूवीज़ इन मूवी थिएटर्स. सो मैंने कभी कभी ये भी किया है कि क्योंकि मुझे कोई कंपनी नहीं मिल रही है, ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रेस हो रहा है बट सबको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो सब लोग नहीं, किसी को पढ़ाई करनी है उस समय, तो मुझे नई कंपनी मिल रही है एंड मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है. तो बहुत बार मैं क्या करती थी कि मैं जस्ट एक ब्रेक लेकर के एंड आई यूज टू गो एंड वॉच अ मूवी. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, ऐसा मे बी 6 महीने में एक बार होगा, बट कहने का मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक and then come back and start studying again. You will feel really fresh. Sixth measure would be proper planning. So स्ट्रेस होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने प्लानिंग ही नहीं की है ठीक से. तो क्योंकि ठीक से प्लानिंग नहीं की है, इसलिए प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पा रही है और सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है. इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं. तो स्ट्रेस को अवॉइड करने का, वो हो ही ना, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए ही ना, तो उसका तरीका ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो. तैयारी अच्छी कैसे होगी? जब आप प्लानिंग अच्छी करेंगे. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप प्लानिंग करें अच्छे से, तैयारी शुरू करने से पहले और बीच बीच में प्लानिंग करते रहें, टाइम मैनेजमेंट करें अपनी. मे बी आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि आप चाहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंड.
Why I am coming to this point is because we know कभी कभी स्ट्रेस एग्ज़ाम क्लियर ना करने का इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं. Recently, in the recent past, in last I think 3 or 4 months, we have read about the incidents of two candidates, one in Rajendra Nagar and one in Mukherjee Nagar, two candidates who took their own lives, who committed suicide by due to the exam stress, due to the pressure that they were feeling of not qualifying the exam. I think that was immensely heartbreaking for me personally, and I think for everyone in general. So what I feel is that a person gets into that state because of that chronic stress. आपको स्ट्रेस होता जा रहा है, आप उसको अपने दिमाग में बिठाए जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई मेजर्स नहीं ले रहे हैं, और अल्टीमेटली a person takes this kind of an extreme step. So what I want to tell everyone is that, and what I tell people around me also who are preparing, is that this is not the end. There are 100 good things that we can do in life to make a good career. This is not the only thing that you can do. This is not the end of it. So you do not need to make it a very big deal. Nothing is over and above your life. Nothing is over and above the love of your family, of your friends, of your loved ones. So I sincerely request all candidates to keep that in mind. And last but not the least, if you feel stressed even after taking all these measures, and if you are not able to cope with this stress, and if the thoughts like taking extreme measures like taking your own life are coming to your mind, you need to immediately seek help. There are options available around you. You need to talk to people, find help, talk to a therapist, talk to a doctor, talk to experts. These days there are a lot of counseling centers, especially for students who are preparing for exams like these. So what I mean to say is that if you are not able to manage stress on your own, don't hesitate to seek help. With that, on that note, I would like to conclude this video by saying that stress is inevitable, but there are ways to manage it. And if we are able to effectively manage the stress, we will be able to clear the exam while not having to face the consequences of exam related stress. With this, I would like to end the video. Please let me know in the comment section whether you liked the video or not, and what kind of content would you like me to share with you, और किस तरह की बातों पे, टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूं. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस फ्री काउंसलिंग का फ़ायदा ले पाएँ. And that would be real encouragement for me to keep posting on this channel. I wish you all the best. Until next time, bye. Thank you for watching the video. Take care.